Jai Hind students. In this video I am going to describe the cyclic photophosphorylation of chapter photosynthesis, topic for light reaction. In the previous video I have taught you about what is photophosphorylation, how many ways photophosphorylation can take place. A short revision is that photophosphorylation is the process by which ATP is synthesized in the presence of sunlight. Okay. This photophosphorylation can be of two types, cyclic and non-cyclic. In the previous video, I have taught you about non-cyclic photophosphorylation, which is also known as Z scheme. In that photophosphorylation, both photosystem is involved, that is PS1 and PS2. PS1 means 700 nm chlorophyll. It has the chlorophyll which absorbs 700 nm wavelength of sunlight, and photosystem 2 has the chlorophyll A which will absorb the 680 nm of wavelength of sunlight. In cyclic photophosphorylation, both ATP and NADPH2 was being synthesized. The possible distribution of this non-cyclic photophosphorylation in the membrane system of chloroplast is the appressed part of the thylakoid. The first video of my photosynthesis topic, I have make you understand what is appressed part and what is non-appressed part. The thylakoid are arranged in a sagged manner one upon another, so the membrane touching the another membrane of the thylakoid in a piled like structure, that is called as appressed part. Okay. If the thylakoid is situated one upon each other, so the membrane touching the other thylakoid of the grana is called the appressed part, and the non-appressed part of the grana or the stroma lamellae is that which falls in the direct path of the sunlight. Okay. So the possible distribution of the non-cyclic photophosphorylation was appressed part because it involves both the photosystem 1 and photosystem 2. When the sunlight intensity will be high, then only it can reach the appressed part of the thylakoid. When the wavelength and the intensity of the sunlight will be high, then only it can reach here, and wavelength of PS2 system will can start PS2. Okay. So these all are situations, these all where the PS2 will be situated and where the PS1 and where both PS2 and PS1 is situated is totally depend upon the intensity of the light. Where the light will fall directly, then there PS2, then there PS1, okay, and PS2 both will be situated, but PS1 will be active only when the light of the sunlight will be very intensified, wavelength will be low, so it will be PS system 2 and it will be distributed at the appressed part. Okay. But in non-cyclic photophosphorylation, both photosystem is involved, so the possible distribution of this non-cyclic photophosphorylation is appressed part of the thylakoid. In non-cyclic photophosphorylation, there is splitting of water. Okay, and I have explained this video in the previous video with this diagram. That
how there is a splitting of water in the non-cyclic jet scheme photophosphorylation, and splitting of water helps in the continuous electron supply of the photosystem 2, that is providing its electron by exciting of sunlight to the photosystem 1, and finally the electrons of photosystem 1 is absorbed by NADP+. So it was a quick revision of about non-cyclic photophosphorylation. In this video I am going to describe the cyclic photophosphorylation. It is little bit easy than the non-cyclic photophosphorylation. Many concepts you have already studied, you have already understood, children. So it is easy to describe the cyclic photophosphorylation. In cyclic photophosphorylation, pH system 1 only functions. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में केवल पीएच सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है. आप यहाँ ध्यान देंगे पीएच सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, इसका वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिम है. ये फोटो सिस्टम वहाँ एक्टिव होगा जहाँ डिम लाइट है, और ये आपके स्ट्रोमा लैमेली में होगा, क्योंकि अगर कमज़ोर लाइट है तभी वो डायरेक्टली आपके नॉन एप्रेस्ड पार्ट में रीच कर सकता है. डिम लाइट हो, अगर आपका डिम लाइट हो तभी तो वो डायरेक्ट डिम लाइट भी होने, अगर रोशनी कम है तो भी अगर सनलाइट पड़ती है तो ये डायरेक्ट सरफेस वाले पे सनलाइट पड़ सकती है. एप्रेस्ड पार्ट पे ये सनलाइट नहीं जा सकती है. इसलिए एप्रेस्ड पार्ट में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है, जहाँ पे पीएच सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व है. पीएच सिस्टम 1 का वेवलेंथ कम है, इट मीन सनलाइट ज़्यादा है, तो सनलाइट जब तेज रहेगी तब तो ये अंदरूनी पार्ट में भी पहुँचेगी. इसलिए जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो उसमें पीएच सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, दैट इज वेवलेंथ 700 इन्वॉल्व है, एंड it means the intensity of sunlight is slow in the dim light or cloudy environment. The sunlight, if the sunlight is falling on here, so only the outer face of these grana and stroma lamellae will receive the sunlight. So here the photosystem 1 is active. Okay, and the cyclic photophosphorylation will be active. So possible distribution of cyclic phosphorylation is the stroma lamellae and the non-appressed part of the grana. Now come, sunlight is falling in the same way that was taking place in the cyclic non-cyclic photophosphorylation. It will be absorbed, it will absorb the photons of the sunlight, molecules of energy. It will, after absorbing the energy of the sunlight, it will come to the excited state, then it will become unstable. After becoming unstable, it will search some friend that will gain its unstability amount of energy. अनस्टेबल होने के बाद ये कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना स्टार्ट करेगा जो इसकी एनर्जी ले ले और इसको स्टेबल कर दे. फिर वो तुरंत ही अपने बगल वाले लोअर एनर्जी लेवल पे बैठे हुए प्रोटीन्स को सर्च कर लेगा. ये प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स हैं. इसके कंपैरिजन में ये सारे लोअर एनर्जी लेवल पे सिचुएटेड जो प्रोटीन्स हैं वो एक दूसरे के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स हैं, तभी वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हुए चले जाते हैं. जैसे ही उसको एक पार्टिकल मिलेगा A0, ये एक टाइप का क्लोरोफिल, मॉडिफाइड क्लोरोफिल ही है जो कि फर्स्ट एक्सेप्टर है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में. A0 ये इसके इलेक्ट्रॉन को, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा. चूंकि ये लोअर एनर्जी लेवल पे सिचुएटेड है, इसको कम ही एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी. यहाँ से एनर्जी रिलीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा स्टेबल होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन थोड़ा एनर्जी लॉस करेगा, लेकिन वो अभी इनिशियल एनर्जी लेवल पे नहीं आया है. सो इस बीच के रास्ते में उसे बहुत सारे प्रोटीन्स मिलेंगे जो इस इलेक्ट्रॉन को खींचते हुए जाएंगे और एनर्जी भी लॉस होता हुआ जाएगा. इसलिए कोई भी फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, दे आर डाउन हिल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन.
डाउनहिल क्योंकि वो लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स पास होते जाते हैं एंड दैट काउजेज द लॉस ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू सिंथेसिस ATP कंबाइनिंग ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो आपके सेल में है, प्लांट के सेल में है, वो दोनों कंबाइन करके ATP बनेगा और ये एनर्जी जो रिक्वायर होगी वो यहाँ से आएगी। केवल एनर्जी से ही ATP नहीं बनता है, और भी प्रोटॉन ग्रेडियंट की ज़रूरत होती है जो कि नेक्स्ट टॉपिक में है, आपको पढ़ना है दैट हाउ द ATP विल बी फॉर्म्ड। द नेक्स्ट टॉपिक इज so it will pass to A0 modified chlorophyll, phyloquinone that is called as A1, iron sulfur protein, ferredoxin. Iron sulfur protein is also a part of ferredoxin. These all are types of protein and it has element iron that are strong oxidants that will attract the electrons coming from the upstairs one by one. Iron sulfur protein, ferredoxin, cytochrome B6F. Cytochrome is a strong oxidant protein, type of protein. This cytochrome you will also study in mitochondrial electron transport in case of ATP synthesis during respiration. Cytochrome B6F, then plastocyanin, and then finally the electrons will be at the level of energy P700 and this electron, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक निकला है सो ये अनस्टेबल है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लास्टोसाइनिन तक आते आते इतना इसका एनर्जी अमाउंट हो जाता है कि वो फिर से P700 में इंटर कर जाता है। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ साइक्लिक मैनर। ये साइक्लिक मैनर चक्के की तरह चल रहा है। इस यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अपर एनर्जी लेवल पे गया, फिर वो धीरे धीरे लोअर एनर्जी लेवल्स पे प्रोटीन पे पास ऑन किया और लास्टली फिर से उसी P700 के क्लोरोफिल अमाउंट में वो इंटर कर जाएगा। सो इट डजंट नीड एनी एक्स्ट्रा मोटर लाइक सिस्टम like splitting of water that will supply it to electron because it is self satisfied cycle. ये खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, फिर दूसरे लेवल से इलेक्ट्रॉन को पास कराते हुए फिर वो इलेक्ट्रॉन उसी P700 का पार्ट हो जा रहा है। सो दिस साइकिल डजंट नीड एनी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर that provides the extra electron because इसका इलेक्ट्रॉन निकल कर फिर से इसी आपका क्लोरोफिल का पार्ट हो जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। In cyclic photophosphorilation, there is synthesis of only ATP. No NADPH is synthesized. Okay. The great difference between cyclic and non-cyclic. There is formation of only ATP in cyclic photophosphorylation, and in non-cyclic photophosphorylation, there is formation of ATP and plus NADPH also. If you have remembered, there is formation of ATP and NADPH also. This is Z scheme or non-cyclic photophosphorylation. In non-cyclic, there is splitting of water. In cyclic, there is no splitting of water. In non-cyclic, both the photosystem is receiving and acting in the production of ATP and NADPH. Means both the photochemical system is coordinating with each other to produce the ATP and NADPH. But in cyclic, there is involvement of only single photosystem, that is P700. The non-cyclic photophosphorylation is distributed in the appressed part of the grana. The non-cyclic photophosphorylation is distributed among the non-appressed part of the grana because in this both the photosystem is involved. Photosystem 1 and 2 means complete light, intensified light is required, एंड जब धूप तेज होगी तभी ये धूप यहाँ तक पहुँचेगा और आपका दोनों फोटो सिस्टम एक्टिव होगा। बट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो फोटो सिस्टम 1 को केवल इन्वॉल्व करता है जिसका वेवलेंथ 700 है। इट मीन्स आपके सनलाइट की इंटेंसिटी कम भी रहेगी और यहाँ पे ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता रहेगा।
सो आपका जो आप जब भी एग्ज़ाम में या कहीं भी डिफरेंस का बनाएं, डिफरेंस का क्वेश्चन करें, तो यू मस्ट राइट इन अ टेबुलेटिंग फॉर्म, and it is very important question in your exam, the difference between cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation, it is cyclic in nature, it is in the form of Z later, Z scheme it is also called. Cyclic photophosphorylation, the photosystem, only the photosystem 1 is involved. In non-cyclic photophosphorylation, both the photosystem is involved. In cyclic photophosphorylation, only ATP is synthesized. In non-cyclic, ATP and NADPH2 both are synthesized. In cyclic photophosphorylation, the cyclic photophosphorylation is located in the stroma lamellae and non-appressed part of the grana. Okay, because because only PS1 is involved and it can run in also dim light. तो dim light भी कहाँ आसानी से जाएगा? द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन सिस्टम, जो डायरेक्टली एक्सपोज्ड है सनलाइट से, अंदरूनी पार्ट नहीं. सो दिस इज सिचुएटेड इन द स्ट्रोमा लैमेली एंड नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेना. और ये स्ट्रोमा लैमेली एंड नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेना में जो आपका NADP है वो लोकेटेड नहीं रहता है, जिसके कारण NADPH2 की सिंथेसिस नहीं होती है. This non-cyclic photophosphorylation is located in the appressed part of the thylakoid. धसे हुए पार्ट जो होते हैं कहेंगे, the compressed part of the thylakoid, वहाँ situated रहता है. In cyclic there is no splitting of water. In non-cyclic there is splitting of water. So I have make you understand the 6 point of differences. That is enough for writing in long question, long answer also, if it will be come. So always the differentiating question must be done in a tabulating form, point wise answer. So I think you have understood about the photophosphorylation. A brief summary of this video and the previous video also. Photophosphorylation is the synthesis of ATP in presence of sunlight. It may be of two types, cyclic and non-cyclic. The non-cyclic is also known as Z scheme. In non-cyclic, both the photosystem is involved. In cyclic, only one photosystem is involved. But the main motto of both the cycle is the synthesis of ATP. I think the nature has formed both the different photocycles because there is difference in the amount of sunlight also, the mood of sun also. सूरज के मूड में पर कभी वो बहुत तेज भी हो सकता है, बहुत धीमी भी हो सकता है. तो केवल हमारे प्लांट्स में ऐसा साइकिल चलता है जिसको तेज सनलाइट की ही पर ही वो सिस्टम एक्साइट होता. तब तो अगर सनलाइट डिम होता तो कोई उसमें ATP और कोई उसमें आपका लाइट रिएक्शन हो ही नहीं पाता. इसलिए आई think that there is differentiation of type of photophosphorylation and there is differentiation of photosystem that can absorb both the dim light and both the highlight also. So this is all about your photophosphorylation. How I have talked in the both video that ATP will be formed. In the next video I will explain that along with the loss of energy, with the help of energy, what other situation is required that will help in the synthesis of ATP. There are other conditions also that must be present in the organelle that will help the formation of ATP along with the energy that is being released during the photophosphorylation. So till now this is all about your cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Wait for the next video in which I will explain what are the conditions that will be required for the synthesis of ATP. Okay, thank you.